Hello, everyone. This is our last session of symmetry and group theory. So, this is our 12th live interactive session. So, in the last lectures, I hope you have followed the sessions properly and it would have been helpful for you. This is the last session. I would try to cover as much as possible, so whatever is left. And in the last lecture we discussed about the molecular orbital diagrams, how atoms combines to form molecular orbitals. So here we will be discussing molecular orbital diagrams for homodiatomic molecules, then heterodiatomic molecules, and also then in different kind of molecules such as ammonia, BS3, etc. After that, we will try to cover MLCT, LMCT, Jones Taylor distortion. So I think I would try to cover maximum things today. So if you have any doubts, you can post in the discussion forum. So this is our last interactive session. I hope uh, you will follow these sessions. So I have already uploaded the content, these videos on YouTube channel, and slides for these lectures are also available in a link which we have shared, a Google Drive. So please follow that, and all the best for your exams. So we will be starting at 5 p.m. if someone wants to join.
Okay, so a bit late. Let's start our session. Molecular orbital diagram. So we will start with the very basic hydrogen molecule. So here, in the first example, how atomic orbital overlaps in hydrogen molecule to form molecular orbital diagram. To form molecule, and what is its molecular orbital diagram? So, firstly, we will draw this energy axis. While drawing the molecular orbital diagram, please don't forget to draw this energy axis. So we will be taking two hydrogen atoms which has electronic configuration 1s1 on two sides. Now these two atomic orbitals will interact to form a bonding molecular orbital, and we have already discussed in the last lecture how they form these bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. This s2 molecule has the infinite h point group, and since it has one center of symmetry, so in cases when center of symmetry is present, then it has to be written with g-red or un-g-red nomenclature. That's why we have this bonding molecular orbital as sigma g and anti-bonding molecular orbital as sigma u star. So now these two electrons will be filled in these bonding molecular orbitals like this. From this we will calculate whether what is the bond order for s2 molecule. Bond order is equal to number of electrons in bonding orbital minus number of, wait a minute, bond order is equal to number of electrons in bonding orbital minus number of electrons in anti-bonding orbitals divided by 2. So here we can see that this is bonding orbital and this is anti-bonding orbital. So we have two electrons in the bonding orbital, bonding molecular orbital, and zero electrons in this anti-bonding molecular orbital. Okay, so 2 minus 0 by 2 is equal to 1. So we have one bond order, which means we have only one bond between these two hydrogen atoms, which exists like this. Now moving on to second example,
with these molecular orbital diagrams, we can also find out whether a particular molecule will exist or not. So let us take this example of helium, two helium atoms. So how their atomic orbitals overlap and do they form a molecule? So firstly, we will draw a energy axis. So this is helium atom. So we have two electrons in Venus orbital. Now these two atomic orbitals will combine, will overlap to form bonding molecular orbital sigma g rate and anti-bonding molecular orbital sigma u star. So when we fill up these electrons in these bonding and anti-bonding molecular orbitals, so they take up both of the molecular orbitals here. Now, the bond order here will be number of electrons in the bonding molecular orbital. Here we have two electrons which are in sigma g orbital. So, and two electrons in the anti-bonding sigma u star molecular orbital. So 2 minus 2 by 2 equal to 0. This shows that there will be no bond between two helium atoms. So the helium molecule will not be possible and it will stay as an inert gas, inert helium only, since bond order for orbital overlap of two helium atoms to form helium molecule has bond order 0. Therefore, this helium molecule will not be possible and it will stay as an inert helium atom only. Okay, so now let us take the next example for lithium. First draw the energy axis. So the electronic configuration for lithium is 1s2 and 2s1. There are three electrons. Now these 1s orbitals
will overlap to form sigma G. First, I'm mentioning it as first sigma G bonding molecular orbital and first sigma G star anti-bonding molecular orbital. And this 2s orbitals will overlap to form 2 sigma G and 2 sigma U star antibonding molecular orbital. So it's just 1 2, this is the number I am mentioning. It has nothing to do with any, it's just a number that first bonding molecular orbital, second bonding molecular orbital, kind of this. So now when we fill the electrons in these bonding and anti-bonding molecular orbitals, so this shows that actual bonding will take place in the valence shells. Take place here in the valence shell. So now, if we find out the bond order for Li2, and these core shell electrons doesn't take part in bonding. So here bond order for Li2 will be, so these here we will be finding the bond order in the valence shells only. So here we have two electrons in the bonding molecular orbital 2 sigma G and 0 electrons in the anti-bonding 2 sigma U star. So we will have 2 minus 0 by 2 equal to 1. So here the bond order is 1. Therefore, Li2 bond is possible and it has bond order of 1. Okay. So now next is Be2. These are some kind of basics. So you must have learned it already in the previous classes, but here you are learning it how these molecular orbital diagrams emerges from these symmetry and point group theory. So how is this? How the what is the application of symmetry and point group in making the molecular orbital diagrams of molecules? So, what are the symmetries of the atomic orbitals which are overlapping to form a molecule? Okay, so here, if we take only valence shell, so beryllium has 1s2, 2s2 electronic configuration. So, we are taking only the valence shell electronic configuration, that is 2s2.
which will form bonding molecular orbital, sigma bonding molecular orbital, sigma G rate, and sigma ungirated star as anti-bonding molecular orbital. So after electron filling in these molecular orbitals, we get both bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals are fully filled. So the bond order will be 2 minus 2 by 2 is equal to 0, which again shows that beryllium 2, that is a beryllium bond, will not be possible. So now we will firstly study the molecular orbital diagram for oxygen, and then we will be discussing about boron, carbon, and nitrogen. So oxygen has electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. So this is the core electron, and these are valential electron. So drawing the energy axis and taking the valence shell electrons, 2s, so 2px, 2py, 2pg, these are degenerate orbitals. Now this is sigma g bonding molecular orbital, sigma u star. Now firstly 2pg orbitals overlap to form bonding molecular orbital sigma g. If I say this is in the valence shell, this is first bonding molecular orbital, then this is 2 sigma g, second bonding molecular orbital, formed by 2pz overlap of 2pg orbitals. Then degenerate px and py orbitals overlap to form bonding pi u, pi ungirated molecular orbitals, bonding molecular orbitals, and so these are so if you see these three orbitals, that 2px, 2py, 2pg orbital for two oxygen atoms, so they are on same energy level. Okay, so when this is the
the net zero of these energy. So if we have molecular orbitals below this, then those are bonding molecular orbitals, and above it we have anti-bonding molecular orbitals formed by Pg, 2Pg, overlap of 2Pg atomic orbitals and 2Px 2Py orbitals. So lower the bonding molecular orbitals, in lower the bonding molecular orbital in energy, higher will be the its anti-bonding molecular orbital. So that's why we have this 2 sigma u star as highest energy, and this is this pi g star lower in energy as compared to sigma u star. Okay, so now if we fill the electrons for these, so we have 6 electrons in the bonding molecular orbitals and 2 electrons in the pi g star anti-bonding molecular orbital. So in spherical group, all type of degenerate orbitals are possible for same energy level. So oxygen atom is spherical in nature, so px, py, pz are degenerate. Sigma g is lower in energy as overlap will be more and electron will get more space to move, which is according to 1D box, which I taught you in the last lecture, which has energy formula equal to n square h square by 8 ml square. So here this as more the space an electron gets to more space an electron gets to cover, um, lower will be its energy. That's why this sigma g rate is lower in energy, and, and so during head-on interaction, the bonding will take place with this sigma g rate. So finding the bond order, so we have 6 electrons that is in second sigma g rate and this pi u bonding molecular orbital. So we have 6 electrons in the bonding molecular orbitals and 2 electrons in the pi g star anti-bonding molecular orbital. So this gives, sorry, 2 as the bond order. So bond order is equal to 2. And this oxygen molecule is paramagnetic in nature, which means that it has unpaired electrons, and we can see then that it has unpaired electrons in the antibonding molecular orbital. So if we remove an electron, if we remove an electron from oxygen, so electron will be removed from highest occupied molecular orbital, which is pi g star here. So it will become O2 minus, which we call superoxide.
So if we add one electron, and it will become O2 minus, which we call as superoxide. So when we remove electrons, it will be removed from highest occupied molecular orbital. But when we have to add electron, that will be added in its lowest unoccupied molecular orbital. So which is sigma u star here. So O2 minus will have a bond order of 1.5, and if we add another electron in O2 molecule, then it will become O2 2 minus, which we call peroxide, and it will have bond order of 1. The next molecule is fluorine. So it fluorine has electronic configuration as 1s2, 2s2, and 2p5. So if we take the valence electrons only, it is in 2s and 2p orbital. It will form a sigma G rate bonding molecular orbital, sigma U star, this is sigma G. So the molecular orbital diagram for fluorine will be similar to oxygen. So let's fill up the electrons. So now we have 6 electrons in the bonding molecular orbital and 4 electrons in the anti-bonding molecular orbital. So 6 minus 4 by 2 is equal to 1. So here we have bond order of 1. Therefore, F2 molecule will exist with a bond order of 1.
that is 1 sigma 1. So now with boron and carbon, there is a concept that comes into account which is sp crossover. Sorry, in boron, carbon, and nitrogen, sp crossover takes place because, as we have learned in the very beginning of this molecular orbital concept, that two orbitals which have which are similar in energy and which have same symmetry will overlap and will overlap better, and they will combine to form a molecular orbital. So here, in the case of boron, carbon, and nitrogen, the 2s and 2p orbitals have almost similar energy and same symmetry. Therefore, they combine, and there there is a kind of crossover observed in these boron, carbon, and nitrogen molecules. Sp crossover. So when molecular orbitals of the same symmetry formed from the combination of 2s and 2p atomic orbitals are close enough in energy to further interact, lead to a change in the expected order of orbital energies. So if I make a energy diagram,
So in these boron, carbon, nitrogen, the energy difference between 2s and 2p is very less. And as I told, when molecular orbitals of same symmetry formed from the combination of 2s and 2p atomic orbitals are close enough in energy to further interact, it leads to a change in the expected order of orbital energy. And let us see how this changes the molecular orbital diagram. So if we make a molecular diagram for F2, sorry, B2, 2s, boron. So so boron has electronic configuration of 1s2, 2s2, and 2p1. 2s. So here we have 1 sigma g or g-red orbital and 2 sigma u star, and this sp crossover makes a third sigma g orbital higher in energy than degenerate p 2px 2py pi u star bonding molecular orbital. So this is the crossover you can see here. So this is the sp crossover taking place here. So this is pi g star and pi u star. So
So now when we fill up the electrons, we will have 2 electrons in the bonding molecular orbital and 0 electrons in the anti-bonding molecular orbital. So now the bond order. So the bond order is minus 2 by 2 equal to 1. Good evening, ma'am. Hi, good evening. Yes, Neha. Do you have any doubt? Yes, ma'am. Okay. So you can ask. What is it? Ma'am, I have a doubt regarding the examination. हमारा एग्जाम है ना अभी 13 को ये सब्जेक्ट का. Okay. हाँ, सो मैम आप बता सकते हो क्या सिर्फ कि हमें ये भी नहीं पता कि एमसीक्यू टाइप है कैसा है. आप थोड़ा गाइडेंस दे देंगे क्या? Actually, Neha, I'm a TA for like interactive sessions. We are not the core TAs for this course. So, Okay. the name for the core TAs might be mentioned in the videos. I think you can ask this question in the discussion forum because we are not directly related to the course. We are just here for the doubt solving sessions. ओके मैम. But yeah, for the last year, I was looking for the discussion forum of the last year. There, sir has mentioned that it will be a mix of objective and subjective questions. So maybe this time the same pattern will be followed. But to make sure to confirm this, you should ask this question in the discussion forum. Okay. ओके. Any doubt with the course content? Any topic you have problem with? यस मैम, डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर और Okay, derivation of projection operator. Just a minute. So I haven't solved the projection operators derivation, but like I solved the questions for it in last to last session maybe. So you can ask me like exactly where you are facing the problem. मैम आई हैव रिटन, मतलब मैंने लिखा हुआ है. Hmm. एक सेकेंड. मैम यहाँ पर ये मैट्रिक्स वाले पार्ट में ना ये जो सबमिशन का है ना, Hmm. ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझ रहा है. एक दिस वन. सेकंड मैं देखती हूँ. इफ आई हैव नोट्स फॉर दैट आई विल हेल्प यू. So derivation of projection operator, this is minus 1 by 2. Okay, so this they have mentioned it like for C3 into XYG, and from where this matrix you get, like you are asking this question. यस मैम, दिस वन. ये वाला प्रोजेक्शन ऑपरेटर डेरिवेशन और लेट अस टेक वाला क्वेश्चन है मैम, ये वाला. Let us take C2V point group. We will consider general function zx plus yx plus z square.
ओके। and see how to obtain the function out of this one. सो इसके नीचे यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स लिखा है। सो एक डाउट सेशन में मैंने ये आपको बताया था। गिव मी अ मिनट। हाउ टू राइट अ मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ दीज, लाइक C3 ऑपरेशन के लिए हम मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है इन्होंने मैट्रिक्स सिस्टम। एंड मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सा मतलब D3 है D4 है, वो भी मुझे नहीं समझ रहा था। पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ मैम, वो ही भी नहीं समझ रहा था। मतलब C2 का पता है, वो एक प्रिंस मतलब एक जो मेन एक्सिस होता है वो C2 होता है, हाँ। तो वो नहीं आ रहा था मैम। पता कैसे चलेगा D इंफिनिटी H कब आएगा, वो सब भी जरा बता दो ना। अच्छा सी, वो बिल्कुल आपको जो आपको बिगिनिंग के सेशंस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। वहाँ पे आप कैसे C2 को, इट्स नॉट लाइक कि हर मॉलिक्यूल में C2 प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जैसे NH3 मॉलिक्यूल है, वहाँ पे C3 प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वहाँ पे हमें हमने दिखाया हुआ है C2 एक्सिस कब हो रहा है, कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो और आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, देन यू विल हैव C2 एक्सिस वहाँ पे। और जैसे अमोनिया है, वहाँ पे आपका C3 एक्सेस होगा, प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये आपको देखना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग की सेशंस में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं कि आपको पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है, सिमेट्री एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो दिस इज वेरी बेसिक ऑफ दिस सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप कोर्स। एंड मैम ये टेबल कैसे बनाते हैं, आप स्क्रीन दिख रहा है आपको? आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इफ यू आर एबल टू। ये टेबल कैसे बनाते हैं मैम? कैरेक्टर इसमें टेबल। कौन कौन? हाँ हाँ, ये टेबल। अच्छा सी, अगर आप ये इंटरैक्टिव सेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने पूरा सभी सेशंस में स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा बताया है कैसे करते हैं। ऑल्दो इन द मेन लेक्चर सर ने भी बताया, बट आई हैव रिपीटेड ऑल दीज थिंग्स इन दीज इंटरैक्टिव सेशंस। अगर आपको फिर समझ में आ रहा है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन लाइक मेल मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर। ओके। अ, आप मेरे को अपना मेल आईडी शेयर कर दीजिए, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ दीज़ आर द वेरी बेसिक्स, आपको पहले समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉलो। और जो ये मैट्रिक्स आप बोल रहे हो, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हमने बताया है, हाउ टू फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ CN एक्सिस, which is like cos theta sin theta 0, minus sin theta cos theta 0 0 0 1। तो ये पूरा आपको पहले हमने पूरे सेशंस में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो मे बी आपको समझ में आएगा ये सब। एक्चुअली मैम हमें सेमेस्टर, आई एम फ्रॉम MSc, तो सेमेस्टर 1 में था तो हमने डायरेक्टली लर्न कर लिया था, बट वो अब रिमेम्बर नहीं। और अभी सिर्फ 10 डेज ही बाकी है ना एग्जाम के लिए, 30 को ही एग्जाम है। अच्छा। तो ओके। हाँ, आई इसके कैन। लिए मैम थोड़ा ना वीक ऐसा। अभी जस्ट हमारा MSc का अभी कल ही खत्म हुआ है प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब ओवरऑल MSc पार्ट 1 अभी खत्म ही हुआ है। और डायरेक्टली अभी 9 डेज बाद सिमेट्री की एग्जाम है, तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ एक साथ में कैरी करने का। ओके। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप ये सेशंस ही फॉलो करें, बिकॉज देर इज़ नो अदर वे आउट, दीज आर वेरी बेसिक्स। और कभी भी ये लर्न नहीं करना होता है कि ये पूरा कोर्स ही इस चीज़ पे है कि आप कैरेक्टर टेबल्स बना कैसे रहे, सिमेट्री एलिमेंट्स आप विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं मॉलिक्यूल्स में। ओके। सो आई थिंक मैंने पूरा थोड़ा बेसिक से ट्राई किया है। ऑल्दो कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, बट आई हैव ट्राइड इट इन माय ओन वे। अगर आप उसको स्पीड अप करके भी आप देख सकते हो, या फिर मैंने जो स्लाइड शेयर किए हैं एक बार वो देख लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिर से समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट। मैम वो एसेंट एंड डिसेंट एक बार बता दो ना, वो भी नहीं आ रहा था कल। क्या बता रहे हो? एसेंट एंड डिसेंट, एसेंट एंड डिसेंट पार्ट है ना वो, ऐसे। SALC के बाद एसेंट डिसेंट इन सिमेट्री। सॉरी, दैट आई हैव नो आइडिया अबाउट। आप कौन से वाले उसका बात कर रहे हो, लेक्चर का?
लेक्चर नंबर बोल सकते हो क्या आप? 1 सेकेंड ना मैम। सो नेहा, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो स्टार्टिंग के बेसिक सेशंस हैं जहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट्स को कैसे विजुलाइज करना है एंड देन पॉइंट ग्रुप कैसे असाइन करना है एक मॉलिक्यूल को, वहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैरेक्टर टेबल की, तभी आप ये जो एप्लीकेशंस हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर और ये मैट्रिक्स मेकिंग, ये सब आप तभी समझ पाएंगे. सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट. देर इज़ नो वे आउट कि आप डायरेक्टली इन चीज़ों को मेमोराइज करके, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके मैम। Okay, but still you can, like you can take my email id tanukaushik29. I'm writing it in the chat box. आपको फिर भी कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन जस्ट मेल मी, आई शेयर यू माई कॉन्टेक्ट नंबर इफ यू टेक्स्ट मी. मैम वो एसेंट और डिसेंट वो लेक्चर नंबर 40 में है। ओके. So this is in week 11 or week 10? Okay, okay, yeah. वीक 10। Okay. So, like they have taken the first point group, octahedral point group. This is like if we changes any, if we replace, if we take this bonding molecule, this octahedral molecule, Ma6, and if we replace any of the atom with the different atom, then the point group changes. So, if the for example octahedral group has order of 48, and if we replace substitute this a atom with a b atom, a different atom, so the point group is changing. Let's say this is d4h here, so the order for this is 16, which is lower than the octahedral group. So this is what we call decent point group. Here the this order is decreasing, but in case when this order is increasing, that will be called ascent, that symmetry will be called ascent in symmetry.
सो दिस इज अबाउट बेसिकली जब हम एक कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसमें कुछ एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एटम्स आर चेंजिंग देयर, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है। तो वो जो उसका जो नया मॉलिक्यूल बना है उसकी जो भी सिमिट्री होगी, उसका क्या ऑर्डर है, अगर वो कम है तो वो डिसेंट सिमिट्री होगी, अगर वो ऑर्डर ज़्यादा है तो वो एसेंट सिमिट्री होगी। डू यू गेट मी? यस मैम। मतलब आप एक एग्जांपल दोगे मुझे, आपको क्या मतलब समझ में कैसे आया है? कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑर्डर बढ़ेगा तो एसेंट है और ऑर्डर कम होएगा तो डिसेंट है। हाँ, देखो कि आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया, MAB मेटल है, और 6 लिगेंड है जिसमें कि AB5 है। ठीक है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया है वो MAB5, उसकी सिमिट्री क्या होगी? AB5 है ना मैम? हाँ, देखो आपने ले लिया MAB4 ले लिया, सॉरी MA2B4, आपने स्टार्ट इस ग्रुप से किया है। ठीक है, तो इसका सिमिट्री क्या है? D4H, इसका स्क्रीन शेयर, if you are starting from this Ma4B2 molecule which has symmetry of D4H, point group D4H है जिसका ऑर्डर है 16, इससे आप ओक्टाहेड्रल में जा रहे हो, दोनों B एटम्स को A एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 16 से 48 ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एसेंट सिमिट्री हो रही है। बट इसी से आप अगर लोअर सिमिट्री में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस C4V जहाँ पर 8 ऑर्डर है, सो इट इज अबाउट सिमिट्री, कौन सा पॉइंट ग्रुप ले रहे हो जिससे आपका सिमिट्री चेंज हो रहा है, अगर ऑर्डर बढ़ता है तो एसेंट है और घटता है तो डिसेंट है। ओके। ये ऑर्डर कैसे पता चला मैम? अच्छा, पॉइंट ग्रुप क्या होता है, देखो एक कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। ओके, एक सेकंड में आपको बताती हूँ ये बेसिक। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सिमिट्री एलिमेंट्स ढूंढोगे। इसमें क्या क्या सिमिट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं? अगर आप C2 एक्सिस लेते हो, ठीक है, C2 एक्सिस क्या होता है, जब आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, ये हाइड्रोजन 1 एटम है और हाइड्रोजन 2 एटम है, आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये H2 एटम H1 की जगह चला जाएगा और H1 H2 की जगह आ जाएगा। समझ पा रहे हो? एक एक कॉपी को आपके सामने ये फेस है और आपने उसको अपोजिट घुमा दिया 180 डिग्री, आप रोटेशन आपको समझ में आता है क्या होता है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे H1 की जगह H2 आ गया और H2 की जगह H1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट है। एट द एंड दो हाइड्रोजन एटम्स है पर वो जिनको हमने नंबरिंग 1 और 2 दी है, तो इससे इसका जो ये है कॉन्फ़िगरेशन है वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, वो OH2 ही है ना, हाइड्रोजन एटम्स ही है ना 180 डिग्री रोटेशन के बाद भी। तो इसमें ये जो C2 एक्सिस है वो प्रेजेंट है और वो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इसके बाद और पॉइंट ग्रुप इसमें क्या है,
जब हम इस मॉलिक्यूल को कट करेंगे एक प्लेन से, और वो प्लेन इस C2 एक्सिस को उसके ऊपर कवर करता है, दिस इज सिग्मा वी। ठीक है। अगर इसी के इस C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन हम लेंगे तो वो आएगा ऐसे करके। क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है? C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक प्लेन लोगे, उससे आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हाँ मिलेगा ना। कैसे? अपने मिडल में ऐसा प्लेन रखा हुआ है तो उसका रोटेशन में मिलेगा ना। अच्छा, एक सेकेंड, मैं आपको विजुअलाइज कराती हूँ। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो जो C2 एक्सिस है वो इस जो सेंटर ऑक्सीजन एटम है इसके थ्रू पास कर रही है, इन द प्लेन ऑफ द दिस स्क्रीन आई एम शोइंग यू। ठीक है। जब आप उसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो दोनों हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करेंगे। तो वो सिमिट्री क्या रहेगी, वो इनका जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। ये देखिए, ये C2 एक्सिस है इसमें। ओके। ये सिग्मा एक्स वाई प्लेन है। ये जो प्लेन ऑफ द बोर्ड है इसको सिग्मा वी प्लेन बोलेंगे क्योंकि ये C2 एक्सिस को कंटेन कर रहा है। सिमिलरली एक ये प्लेन है जो कि ऑक्सीजन एटम को बाइसेक्ट कर रहा है बीच से, और दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपोजिट टू ईच अदर। ये वाला समझ में आया? तो दो सिग्मा वी आएगा, सिग्मा एच नहीं आएगा। सिग्मा एच क्या होता है? जब ये C2 एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन हो और वो इन एटम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा तो दोनों हाइड्रोजन जो बोन्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये C2 एक्सिस है, इसके सिग्मा एच अगर इसमें होगा तो ये ऐसे आएगा। दोनों जो बॉन्ड्स है जो नीचे बेंड है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो क्या ये और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम है? नो मैम। नहीं है ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। अब जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन है एक मेटल वाई। अब इसमें जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब आप इसको C4 में रोटेट करोगे
ये एक्स यहाँ चला जाएगा, ये एक्स इधर, ये एक्स इधर. एट द एंड दीज एक्स एटम्स आर चेंजिंग बट दे आर ऑल सेम. तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी. ओके. और अब इस सी फोर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन है, वो है ये प्लेन जो इन चारों एक्स एटम्स को कंटेन कर रहा है. जब आप इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू बाइसेक्ट करोगे, तो ये वाला जो y है वो नीचे आ जाएगा और ये y ऊपर चला जाएगा. तो क्या होगा, इसको मैं y डैश दे रही हूँ. तो अब आप बताइए, आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है? नो। नहीं हुई है ना. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि आपको मॉलिक्यूल एज इट इज उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी ज्योमेट्री है वो आपको एज इट इज दिख रही है. दैट इज वी कॉल, वहाँ पे वो प्लेन प्रेजेंट है. एक मॉलिक्यूल में वही सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. जब हम वो ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे तो हमें इंटैक्ट हमारी ज्योमेट्री मिलेगी. और जितनी ज्योमेट्री मिलेगी मैम वही ऑर्डर होता है ना? जित ज्योमेट्री नहीं, जितने सिमेट्री ऑपरेशंस मिलेंगे, टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस मिलेंगे, वही उसका ऑर्डर होता है. ठीक है, जैसे कि अब हम तो सबमिशन डी आई स्क्वायर क्या होता है? क्या बोल रहे हो? ऐसा सबमिशन डी आई स्क्वायर लिखते हैं ना? सबमिशन डी आई स्क्वायर, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो. मैं बताती हूँ ऑर्डर क्या होता है. वाटर मॉलिक्यूल लिया आपने. सबसे बेसिक एग्जांपल यही लेते हैं. इसमें फर्स्ट जो सिमेट्री ऑपरेशन है, सी टू एक्सिस. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है कि किस ऑर्डर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. उसमें प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना होता है. सबसे पहले C2, C3, C4, जो हाई ऑर्डर होगा, अगर C3 है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस होगा, C4 है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा. पर इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ही प्रेजेंट है. अगर इसमें C2 और C3 दोनों प्रेजेंट होते तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस होता. ठीक है. पर यहाँ पे C2 एक्सिस ही प्रेजेंट है. नाउ देर इज वन मोर, दिस इज सिग्मा वी प्लेन. वर्टिकल प्लेन्स वो होते हैं जिनमें जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो उसमें कंटेन करें. तो जब आप एक ये प्लेन ले रहे हो, ऑक्सीजन एटम को आप बीच से बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हो और दोनों हाइड्रोजन एटम साइड में हैं उसके. ठीक है. तो वो उन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा. एक मिरर को समझो आप, एक मिरर है जो कि ऑक्सीजन एटम को मिडल से बाइसेक्ट कर रहा है. वो मिरर आपके दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिफ्लेक्ट करेगा उसमें. ठीक है. तो यहाँ पे सिग्मा वी प्लेन प्रेजेंट है. एक और प्लेन प्रेजेंट है सिग्मा वी, जो कि प्लेन ऑफ द बोर्ड है. तो इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में भी सी टू एक्सिस है ना, उसी के ऊपर, जो कि इन सारे एटम्स को, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन तीनों एटम्स को बीच से काट रहा है. ठीक है. ईच एटम वो अपने अपने पार्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. आप समझ पा रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे एक सी टू एक्सिस है, दो सिग्मा वी प्लेन है, और एक आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है जो कि हर एक मॉलिक्यूल में होता है कि इस मैम रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके लिए 2 बार सिग्मा वी लिया। हाँ, दो सिग्मा वी प्लेन्स हैं. देखो कौन कौन से आपको ऑपरेशन देखने होते हैं. प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना होता है आपको, है या नहीं मॉलिक्यूल में. है तो कौन से ऑर्डर का है. C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है. ये आपको सर्च करना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल में कौन सा प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है. फिर आपको देखना है कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन कौन से हैं. प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको फाइंड आउट करना होता है एक मॉलिक्यूल में. तो ये प्लेन दो टाइप के होते हैं, सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन और सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन. सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन वो होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने उस प्लेन पे कंटेन करेगा, उसके थ्रू ही पास करेगा. वर्टिकल प्लेन हैज प्रिंसिपल एक्सिस on it.
लाइक उसी पे हाँ, प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जैक्टली exactly. और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा? जो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर भी होगी ना, वो ऐसे है या वो ऐसे है। अगर ये इस साइड पे प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारी, मान लो, सपोज, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर तुम्हें देखना है कि कोई एक प्लेन है क्या जो मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। तो सिग्मा है चीज प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दो हो गए। फिर आपको सर्च करना होता है उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री है या नहीं। वाटर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री है? नो मैम। नहीं है ना। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री है? हाँ। हाँ। तो आपको मॉलिक्यूल में चेक करना होता है कि सेंटर ऑफ सिमिट्री है या नहीं, इसकी रिप्रेजेंटेशन आई होती है। फिर आपको एक चेक करना होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चार टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, आपको एक मॉलिक्यूल में चेक करने होते हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? ये होता है जो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है प्रेजेंट मॉलिक्यूल में, लेट्स से C2 है, और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन प्रेजेंट है क्या? अगर एक मॉलिक्यूल में एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिसको यहाँ पे S2 लिखूंगी। तो जनरल फॉर्म क्या है? Cn इंटू सिग्मा प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिव्स अस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक मॉलिक्यूल में आपको चार सिमिट्री ऑपरेशन सर्च करने होते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं इस पूरे कोर्स का। बिगनिंग के 3 लेक्चर्स में हमने यही सब प्रैक्टिस करवाया है, तो आप वो सीखोगे तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा। ओके मैम। ठीक है, पूरा कोर्स ही इन बेसिक्स पे है कि हाउ दीज आर हेल्पफुल। इनका एप्लीकेशंस आप तभी समझ पाओगे, तब आप ये सिमिट्री एलिमेंट्स को विजुअलाइज कर पाओगे एक मॉलिक्यूल में। तो मैम बेसिक्स ही करना होगा ना पहले? कोई उसका एस्केप नहीं है आपके पास, आप प्लीज़ वो समझो, और आपके लिए ही हेल्पफुल है। एग्ज़ाम आपने एनपीटीएल कोर्स इसीलिए लिया है कि आप उस कोर्स के बारे में सीख पाओ, है ना। दिस इज यस नॉट मैम। रेगुलर कॉलेज कोर्स। ओके, आपने सीखने के लिए लिया है तो आप उस चीज़ को सीखो, पूरा कोर्स नहीं। अगर आप बेसिक भी सीख गए तो वो आपको हेल्प करेगा। इसके सिमिट्री एंड पॉइंट ग्रुप के एप्लीकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जो कि आज मैं डिस्कस कर रही थी वहाँ पे, जोन टेलर डिस्टोर्शन में, हाँ मैम, नोट्स PSC। सारे लिखे मैंने, हैंड रिटन, आपने जो भी यहाँ पे अवेलेबल था ना आपके उस साइट्स पे, हाँ, मैंने वो सारे लेक्चर्स के नोट्स 49 लेक्चर से 49 लेक्चर सारे लिखे बैठ के। तो वो तो पता है, जॉन टेलर DCFT भी है, सारा लिखा है। आपने बट वीडियोस अभी देख के लिखा है या फिर डायरेक्ट नोट से लिखा है? नोट्स से लिखा है, नोट्स बना के लिखा है। सी वो नोट्स, वो लेक्चर्स आपको उन्होंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। इससे बेटर है आप जाओ लेक्चर्स को देखो, भले आप 2 की स्पीड पे देखो, इतने बड़े लेक्चर्स नहीं है। नोट्स लिखने से चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको, टीचर बोर्ड पे पढ़ाएगा, आपको उसकी चीज़ें बताएगा, तभी आप समझ पाओगे ना। ओके मैम, तो आपका वापस ये सॉल्विंग लेक्चर होने वाला है, डाउट सॉल्विंग? ये लास्ट सेशन है एक्चुअली। आई वांटेड टू कवर मैक्सिमम एप्लीकेशंस टुडे, बट हाफ एन आवर ही बचा है। तो आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कांटेक्ट मी, मैंने अपना मेल आईडी शेयर कर दिया है। ओके मैम, तो आज मैं बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लेती हूँ, कुछ और डाउट रहेगा तो मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। हाँ, श्योर। ओके। वीडियोस को प्लीज़ फॉलो करो, आप भले ही उनको थोड़ा स्पीड में देख लो, बट दैट वे इट विल बी हेल्पफुल। नोट्स ये मतलब याद करने की चीज़ नहीं है, ये पूरा आपको एप्लीकेशन सिखा रहा है कोर्स।
Okay, ma'am. Thank you. Yeah, welcome. Okay. Okay, so last we discussed about B2, molecular orbital diagram of B2. Now I'm writing molecular orbital diagram for nitrogen. Okay, so you let me move forward. We have less time left. So try to draw the molecular orbital diagram for nitrogen and see to yourself. So let us discuss molecular orbital diagram for heterodiatomic molecules. So if we have a molecule, let's say AB, so you can see this molecule doesn't have center of symmetry in it because we have two different atoms here. So the point group here will be, this is the linear molecule we are taking. So the point group will be C infinite V. Let us take a CO. Let us take a C and O atomic orbitals, and we will find out what molecule will it form. What will be the bond order for these two atoms when these two atoms overlap. So taking Z axis as the internuclear axis. So we have two different atoms here. One is carbon and one is oxygen. So oxygen is an electronegative atom, and its the energy of its orbitals, that is 2s and 2p, is lower than the energy of 2s and 2p orbitals of carbon atom. So this time we have
energy difference between the atoms which are overlapping. So this is oxygen 2s, 2p. So here we have one carbon atom and oxygen atom. So as we have discussed already, so when we have this carbon we have when we have boron, carbon and nitrogen, in that case sp crossover will take place. So we will have a molecular orbital diagram like this. This is first sigma orbital, then we have sigma star antibonding molecular orbital, and since we will have sp crossover, so the molecular orbital diagram will look like this. Now if we fill up the electrons, we have 6 electrons in the bonding molecular orbital. So here the bond order will be 6 minus 0 by 2 equal to 3. So we will have 3 bonds between carbon and oxygen, and it will exist as CO. So we have 1 sigma and 2 pi bonds here in the CO molecule. And we will get a similar molecular orbital diagram for Cn minus. So CO and Cn minus are isoelectronic in nature. So you can draw the molecular orbital diagram for it and see how it has a bond order of 3. Try it yourself.
So molecular orbital diagram for non-linear molecules. So if we take the example of NH3, so firstly we will find out the symmetry for 2s and 2s and 2p orbitals of nitrogen atom. Step 1, find out the symmetry of 2s and 2p orbitals of nitrogen atom. So nit- nitrogen has electronic configuration of 1s2, 2s2, and 2p3. So since 2s orbital has 2s orbital will always have totally symmetric representation. uh, so for that you will go in the point group of ammonia molecule. Firstly you will have to find out the that I forgot to mention, find out the point group of the molecule center central atom. So 2s will have totally symmetric representation, and similarly 2pg will have sorry, for px py and pz orbital you will have to check the uh, third column of the character table, where you will have you will see xyg coordinates are like which irreducible representation have xyg coordinates. So for ammonia molecule 2p z axis z coordinate is associated with a1 irreducible representation. So this 2pg orbital will have a1 symmetry, and 2px and 2py will have e symmetry. This you can check from character table. Now for three hydrogen atoms you will have to find out how these atoms will change their positions uh, under each symmetry operation. Our goal is to find out the number of unchanged
hydrogen atoms under each symmetry operation of its C3V point group. So if we basically we have to find the reducible representation for number of unchanged hydrogen atoms as the basis. E2C3 3 sigma V. So under identity operation, these three atoms will not change their position. So it will be 3. Under C3 operation, each of them will change their position. So it will be 0. Now under sigma V operation, uh, at least one hydrogen will remain at its position uh, through which the sigma V plane is passing through. So we will have one hydrogen atom unchanged. So using the reduction formula, now we will reduce this reducible representation in terms of irreducible representation of this point group, and we will find out that it is equivalent to A1 plus E irreducible representation. Okay, this shows that these three hydrogen atoms will have symmetry of A1 and E. So now if we draw the molecular orbital diagram for NS3, firstly draw the energy axis. On one side we will take the central atom which is nitrogen here, and we will consider its valence shell only. So 2s has A1 symmetry, then we have 2pg or 2p orbital where we have x, y and g degenerate orbitals. So g orbital has symmetry of A1 and xyr has E. These have these x and y, px and py orbitals have E symmetry. Now we will have A1 and E orbitals for three. We will have three 1s orbitals for three hydrogen atoms, which will have symmetry equal to equivalent to A1 and E. So how will these combine? A1 of nitrogen atom for 2s will overlap with A1 orbital of three hydrogen atoms to give us first A1 symmetry, and it will also have some character of 2p orbitals A1 because we know nitrogen has sp crossover. Okay, then the e orbitals of nitrogen and three hydrogen atoms will combine, will overlap to form first e molecular orbital, and we will left with one a.
A1. So this will be the molecular orbital diagram for ammonia molecule. So you will have to see how these orbitals will overlap. Firstly, you will have to find the symmetry for symmetry of orbitals of central atom and the ligands around and the atoms around it. Here, which we have three hydrogen atoms. So we will have to find out the reducible representation with respect to how these three atoms will change their position, and then with the help of reduction formula we will reduce them to irreducible representation and find out the symmetry, and then the normal basic overlapping for these orbitals will take place. So we have, this is the molecular orbital diagram for ammonia. If we take a similar example of BS3, so first step will be to find out the point group. So here we have D3H point group. Step 2, symmetry of valence shell orbitals. So boron has 2s, 2px, 2py, 2pg as valence shell orbitals. So 2s will have A1 symmetry, that is totally symmetric representation, which is A1 in the case of D3H point group. So px and py has E double dash symmetry, and pg will have A2 double dash symmetry. So these we will find out from character table by looking at x, y, and g symmetry. Then you will have to find out uh, the basis, reducible representation with the basis of number of unchanged hydrogen atoms. In this case, A3H, E, 2C3, 3C2, sigma H, 2S3, 3 sigma B. So
changed atom. So by solving with the help of reduction formula, we will find out that it is equivalent to A1 dash plus E dash. And then you will draw the molecular orbital diagram. Boron 2s A1 dash 2p xy g. This is A2 double dash. This is E double dash. You have symmetry for 3 hydrogen atom, which is A1 plus E dash. So A1 dash atomic orbital of boron will overlap with A1 dash atomic orbital of 3 hydrogen atoms to form first bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital equal to A1 dash star. Now E dash orbitals will come overlap to form bonding orbitals, and then we will be left with A2 dash, which will have non-bonding character, okay. So this is the molecular orbital diagram for BS3. So so very fastly I'm trying to cover these topics. So we will be discussing how orbitals overlap in an octahedral geometry, for which we will be discussing the CFSE, how ligand splitting, crystal field splitting take place. So I'll try to cover it as fast as possible. I hope you can follow it. So if we take ML6 molecule, octahedral geometry, this metal is transition metal. Bar, nickel, copper, etc. So firstly we will find out the symmetry of valence orbitals of central atom.
So transition metal has its 3D orbital as valence orbital, which has 5 degenerate dx orbitals, dg square, dxy, dyg, and dgx. So out of these, using the quadratic functions in the character table, which are in fourth column, you will find out that dx square y square, you will see x square y square g square are has like these symmetries will have, these symmetries are present in which irreducible representation. So dx square y square dg square, these have eg symmetry. dxy dyg and dgx has d2g symmetry from character table. So now we will find out the symmetry of ligands. So firstly, metal will interact with ligand by forming sigma bonds, and we will have to find now how in different ways different ligands will combine to metal. Symmetry of ligands. In different combine with metal. So if metal kind of, if p orbitals are overlapping, if s orbital of ligand is overlapping with metal. So here we will be considering only half lobe, that is half lobe of both p and s orbital.
So now you will have to find out how uh, this sigma overlap of metal and ligand uh, will take place. How these six ligands will change their position based on each symmetry operation. So this is basically we are finding out the symmetry of 2s or 2p orbital of ligands which are combining with the metal. So we have already find out the symmetry for metal from the character table. Now we are finding out if s or p orbital. For example, if s orbital is overlapping of ligand, that will depend on the type of ligand we are taking, and if p orbital is overlapping of ligand, so for p orbital we are taking the first half lobe only, so it will be equivalent to s lobe, s orbital of any ligand which is overlapping through s orbital. So basically this is the same pattern for to find out the symmetry of 2s or 2p orbital of ligand. Symmetry of 2s or 2p orbital of ligand. So here you will have to find out the reducible representation. How many of these ligand atomic orbitals will change their position under each symmetry operation. So I'm writing it directly because we have already practiced this kind of how to find the reducible representation for these kind of bases. So using the reduction formula, we will find out that it will have symmetry of A1G, T1U, and EZ. So if we form a molecular orbital diagram where the metal and ligand are combining through sigma bond, that is through s or p orbitals of ligand, that is when interaction between metal and ligand is from sigma bond. So metal has symmetry of T2G and EZ. So T2G has three order and T2G has three dimension and EZ has two dimensions. So we have five uh, T2G and EZ orbitals. Then we have valence shell 4s which has A1G symmetry, that is obviously totally symmetric representation symmetry, and then 4p which we find out using symmetry of xy
X, Y, and G in the third column of the character table. So it has T1U symmetry, and using the reducible representation basis of unchanged 6 sigma orbitals of ligand, we find out the symmetry equal to A1G plus B1U, sorry, T1U. T1U and EZ. So the EZ orbitals of metal and ligands will combine to form bonding molecular orbital, and we will be left with non-bonding 3T2G orbitals, and we will have an anti-bonding EG star molecular orbital. So this is the ligand field splitting. This is the reason we get from ligand field splitting. Because we know for octahedral geometry 5D orbitals can't be in same energy because of the ligand field splitting energy. So this is the case when metal and there are sigma bond between metal and ligand. So when interaction between metal and ligand is from pi bond, so we will have to find the symmetry for pi orbitals. And between metal and ligand is from pi bond. So we will be finding the possible pi orbitals. So this is metal, and if it is interacting with sorry, py orbitals, this is the representation you will get. So obviously they will interact through the internuclear axis, but when their d orbitals and p orbitals of ligand are forming the pi bond, so these representation are for that case. So here we will be considering the local Cartesian axis for each ML bond. So taking each bond as z axis and x and y perpendicular to it. So how will it look? So each bond is so each ligand will have its own local Cartesian axis, where the bond between the ligand and metal will be considered the z axis,
So here we will have the Cartesian axis like this. And now we will be finding out the reducible representation for the the change of symmetry of these Cartesian axes, like how these ligand will change. So if I write it, 6 6 3 4 3 C2 I 6 S4 8 S6 3 sigma H and 6 sigma D. So tau L pi will be 12 0 0 minus 4 0 0 0 0 and 0. So reducing it, we will get symmetry of 12 Cartesian axes. Sorry, 12 px and py orbitals, because we already have pg orbital, that is ml bond, which is along internuclear axis, that is pz. So for px and py orbitals, the symmetry is T1U plus T2U, T1G plus T2G. So we will have 12 pi orbitals. So here, case 1, for pi donating ligands, metal has T2G and EZ symmetry orbitals, and we have 12 pi orbitals, below it 6 sigma orbitals, EG plus A1G plus T1U. These have symmetry T2G, T1G plus T2G plus T1U plus T2U. So now the full molecular orbital diagram will look like this. This is T2G star, EG star. So
This is for pi donor ligands. Metal based system. So as compared to where we had sigma bond, this splitting energy, that is delta O, will now reduce as compared to sigma ml sigma bond. So this is for pi donor ligands, and sigma donor ligands had more splitting energy. So case 2 for pi accepting ligands, which uses their pi star orbital to accept electrons from metal. So now this 12 pi anti-bonding molecular orbital, these will have anti-bonding character basically, and will be higher in energy as compared to sigma donor and pi donor ligands. So this is easy orbital, this is metal based system, and this splitting is maximum for pi acceptor ligands. So now you can take a sigma donor, pi donor, and pi acceptor ligands, and you can easily draw this molecular orbital diagram. Uh, so this was basic I wanted to cover, but there is more to. There are a lot of applications like CFSC, JTD. A lot of applications are still left, which I couldn't cover, but this these sessions were mainly to help out you guys with any doubts. But since a lot of a few people showed up, so I try to take content of my own and try to discuss it in my own way. So I hope these sessions were helpful to you. So you can share your feedback, and I would try to improve in next
any course I will be taking, or if I will be taking this course. Or you can share your doubts now also in discussion forum. So this was our last session. I hope I could help you as much as possible. So thank you so much for your patience and attention. So this is it for today, and thank you so much, guys.